Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to discuss about the introduction of general anatomy in your first year of M.B.B.S. Introduction of general anatomy. जनरल एनाटॉमी के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एनाटॉमी की डिफिनीशंस एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि एनाटॉमी को हम आगे किस तरह यानी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ साथ व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक बेसिक सब्जेक्ट है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है आगे स्पेशलाइजेशंस के लिए भी। एनाटॉमी हमारे पास द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we study structure of human body. The branch of medical science in which we study structure of human body. Let's see, for example, we can study about the anatomy in structurally. इसमें हम जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी को, यानी फॉर एग्जांपल बोन को स्ट्रक्चरली वाइज स्टडी करेंगे, मसल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, डिफरेंट रिब्स को स्टडी करेंगे फॉर एग्जांपल। उसमें फिर फॉर एग्जांपल अगर बोन्स में फ्रैक्चर आता है और वो बोन हम प्रेजेंट्स करते हैं क्लिनिकल में, तो फिर उसको हम डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें फ्रैक्चर आया है, उसको हम किस तरह यानी डिफाइन करेंगे कि किस तरह यानी इसको देके जाएंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी एक हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल बेसिक एनाटॉमी, जिसमें हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी को, और दूसरा हमारे पास इसका जो है वो हमारे पास है क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इज द स्टडी ऑफ macroscopic structure of the body as it relates to the practice of medicine and other health साइंस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एज इट रिलेट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ साइंस, ठीक है। जो जो भी फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है वो क्लिनिकल में आता है और वो उसका बोन फ्रैक्चर है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एनाटॉमी, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर में यानी डिफरेंस आएगा, यानी उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है, नॉर्मली से। एंड कोई और प्रॉब्लम होगा, सो दिस इज वी कैन से दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी, ओके। After that, we have to discuss about the very important terminology which we can study the anatomic terminology. About the this knowledge, for example, अगर किसी को ये knowledge का पता नहीं है कि anatomy में हम किस तरह wording को use करता है और किस तरह इसको यानी हम नाम दे सकते हैं different regions को, different structures को, ठीक है। तो इसको इसको जानने के लिए बहुत important है कि ये terminology हर medical student को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजीज, इट मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय सुपीरियर एंड inferior and posterior. नंबर फोर्थ वन इज एंटीरियर्स, ठीक है। ये इंग्लिश की तरह नहीं है कि अप एंड डाउन एंड फ्रंट एंड बैक्स, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनाटॉमी में
हम डिफरेंट नेम्स इसको देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो सुपीरियर कहते हैं यानी अपर साइड। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर ह्यूमन बॉडी, आई एम नॉट गुड इन डायग्राम्स बट understand little bit. So for example this is your human body. So this is your front side, I means जो कि हमारे पास front होता है. So this is we can this is anterior, इसको हम क्या कहते हैं, anteriors, ठीक है। and back side यानी human back side को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं posteriors, ठीक है, क्या कहते हैं, posterior, ओके। and यानी upper side को हम कहते हैं superiors, इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर। एंड लोअर साइड को हम कहते हैं इन्फीरियर्स, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट्स, ठीक है, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल एक्सेट्रा। ऊपर से जो हमारे पास एक वेना केवा आता है और एक हमारे पास नीचे से वेना केवा आता है, ठीक है। टू वेना केवा एंटर इनटू द राइट एट्रियम, ओके। ऊपर से जब हमारे पास एक वेना केवा आता है तो इसको हम नाम देता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। एंड इसको हम नाम देते हैं यानी इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अच्छा, इसको हम सुपीरियर वेना केवा क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हमारे पास ब्लड लेके आती है अपर लिम्ब से एंड ब्रेन से, स्कल से हमारे पास क्या आती है, ब्रेन को यानी ब्लड को लेके आती है, किसको, हार्ट को, ठीक है। सो ये हमारे पास ऊपर जगह से यानी ब्लड को लेके आती है, और इन्फीरियर को ये हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी से हमारे पास ब्लड को आता है, ब्लड को ले आता है हार्ट को, ठीक है। So because due to these reasons we can say that this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava, understand. After that we have to discuss about the important terminologies and the supinations. And before the start of these three things, supinations, pronations and circumductions, we have to must clear the plane. What is the three four different plane about the planes, okay. So planes on the different anatomical regions. Number first one is the medial plane, okay, medial planes. Number second one is the sagittal plane and pyramidal planes. Number third one is the horizontal and transverse plane. Number fourth one is coronal planes, okay. So this is the four different plane, okay. First of all, the important thing is that कि मिडिल प्लेन ये है जो हमारे पास बॉडी को बिल्कुल मिड पॉइंट पर यानी काटा जाए। फॉर एग्जांपल इक्वल पार्ट्स राइट साइड पर चले जाए और इक्वल पार्ट्स लेफ्ट साइड पर चले जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द मीडियल प्लेन, ओके। व्हाट इज सैजिटल प्लेन एंड व्हाट इज पैरामीडियल प्लेन, एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज योर मीडियल प्लेन, इसी के साथ इस तरफ फॉर एग्जांपल शोल्डर की तरफ आप प्लेन लगाओ, बिल्कुल सीधा सीधा काटो कि जो हमारे पास वन थर्ड बॉडी पार्ट है वो हमारे पास चला जाए राइट साइड पर, और जो हाफ पार्ट है वो हमारे पास चला जाए लेफ्ट साइड पर। इसको हम कहते हैं यानी सेजिटल प्लेन एंड पैरामीडियल। पैरा कहते हैं यानी साइड पर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीडियल एंड सेजिटल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स, इसको यानी बिल्कुल सीधा सीधा जो कि अम्बेलिकल के साथ काटा जाए हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स में, इसको हम कह सकते हैं यानी हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स, ठीक है। कोरोनल प्लेन, इसको बिल्कुल इस तरह काटा जाए बिल्कुल हेड पर कि हाफ ऑफ द बॉडी पोस्टीरियर चला जाए और हाफ ऑफ द बॉडी इंटीरियर चला जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोनल प्लेन. So four different planes, okay. Number first is medial plane, number second is sagittal plane, number third one is horizontal and transverse planes, and number fourth one is coronal plane, okay. So this is all about plane. After that we have to continue our lectures in different terminological things. uh, I can draw the specific. I already told you I'm not good in diagrams, but for better understanding, I will draw one diagrams. Suppose this is your human body, okay? For example, this is our human body. This is your
arm. Okay, we discussed the number one is adductions. Okay, number second one is abduction. So these two terminology we have to discuss. Okay, very very important exam point of view. This, for example, this arm toward from the body, I means medial lines. This arm toward from the medial lines. This is called adductions, which is called adduction. Add means plus. Okay, and for example, this arm away from the midline, away from the midline. This is called abductions. Why is called abductions? Because ab mean minus, so this is the simple कि जो हमारे पास यानी ये हाथ जो हमारे पास है यानी बॉडी से अवे लेके जाता हूँ, ये देखो बॉडी से यानी मिड लाइन से अवे लेके जाता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एबडक्शंस, ठीक है। और बॉडी को यानी टुवर्ड लेके आता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एडक्शंस, ठीक है, सिंपल। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द टू important terminology. Number one is ipsilateral. Okay, one is ipsilateral. Number two is contralateral. ठीक है, this is very very important also. Ipsilaterals means के for example right side of the arm, right side arm plus right side foot. Okay, right side arm and right side foot. So this is considered it is the same side of the body. Refer same side of the body is called ipsilateral. Okay, and contralateral mean opposite side of the body. Example, opposite side of the body. Opposite side of the body. Example, यानी left ear, left eye एंड राइट आई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंट्रोलेटरल है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलेटरल. So this is the two important terminologies, ipsilateral and contralateral. Okay, after that we have to discuss a very important terminology, circumductions. What is mean by circumductions? Circumductions. Okay, circumductions means जिसमें हमारे पास all movements आता है, ठीक है। ऑल मूवमेंट किस तरह आता है, यानी बॉलर जब बॉल करता है, ठीक है, उसमें हमारे पास एंगल्स बनता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एडक्शंस भी आता है, इसमें हमारे पास एबडक्शंस भी आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्लैक्शंस भी आता है, एक्सटेंशन भी आता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज थंब. ओके, this thumb, for example, this is your thumb. This thumb adductions and abduction. Okay, and this thumb, for example, this movement of the thumb is called circumduction. Which movement is called circumduction? This movement. Okay, this movement is called circumduction. Okay, this is your thumb and this is your little finger. For example, this little finger meets this thumb head, so this is called opposition of thumb and little fingers. Okay, oppositions of thumb and little finger. This is your adduction, abductions. Okay, this is your anterior surface of the body and this is your posterior surface. But the hand, anatomy and manum, this is your palm side of the hand and this is your dorsal side of the hand. Okay, after that we have to discuss the two different terminologies more. One is flexions and another is extension. Okay, flexions and number two one is this extension. What is mean by flexions and extensions? Suppose for example this is I'm not draw the elbow joints, but I suppose the elbow joint, for example, like that. For example, this is your elbow joint, suppose, just for example. Okay, like this is your phalanges, just I suppose for your understanding I will give your example. uh, Elbow joint, for example, this is your elbow joint, this for example flexion extension, okay, like that. For example, little finger, see the little finger, this is your flexion, this is your extension, flexion extension. Okay, like the thumb, see the thumb, this is your thumb
flexion, extension, flexion, extension. Okay, this is so simple. Flexion, extension. Okay, so this is the main terminologicals ending. After that, we have to discuss the very important branch of anatomy, which we are very understanding and which is very important. So draw the notes, and inshallah we will upload more videos in anatomy and physiology, biochemistry, as well as other subject of our M.B.B.S for better understanding. So this is my first videos in your general anatomies. Inshallah, I will upload more videos in our anatomy, and you will understand and learn more and more things. Okay, so number first one is cadaveric anatomy. Okay, we have to start the subdivisions of anatomy. Okay, subdivisions of anatomy. So the subdivision of anatomy, number first one is cadaveric anatomy. What is mean by cadaveric anatomy? We will also upload some MCQs on your lectures after the lectures in your YouTubes and as well as of my Facebook page. अच्छा, कैडेवेरिक एनाटॉमी हमारे पास क्या होता है? ठीक है, कैडेवेरिक एनाटॉमी हमारे पास होता है, इट इज द स्टडीड ऑन डेड इम्प्लांट preserved bodies. Okay, what is mean by implant and preserved bodies is studied on dead implant preserved bodies usually with naked eye. इससे क्या मुराद है naked eye? देखो, example, macroscopic और gross anatomy. अच्छा, कैडेवरिक से मुराद ये है कि कैडेवरिक एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑन डेड एम्ब्लेट प्रिजर्व बॉडी। वो स्टडी जिसमें हमारे पास बॉडी को यानी डेथ फॉर्म में पड़ा होगा और प्रिजर्व किया होगा, उसको महफूज किया होगा, और उसको हम स्टडी करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरली। एंड जो यानी नेकेड आई के ज़रिए हम स्टडी करेंगे। नेकेड आई से मुराद मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, इससे हमारे पास दो फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, in medical field we can study the preserved bodies in cadaveric anatomy. Understand, cadaveric anatomy classified in two approaches, two different approaches. Okay, two different approaches means two approaches. Number one is regional anatomy. ठीक है, regional anatomy means the body is studied part like. ठीक है, the body, it is the so simple thing, but it is very very important. If you know this concept, so फॉरवर्ड जाना बहुत मुश्किल होता है. Studied part like. ठीक है, like example, I will give your example for better understanding. So regional anatomy, the body is studied part like. ठीक है, part like example, head and neck. ठीक है, head and neck, brain. ठीक है, एब्डोमेन. ठीक है, अपर लिम्ब. ठीक है, लोअर लिम्ब, लोअर एक्सट्रीमिटी, एटसेट्रा. ओके, सो जब हम बॉडी को पार्ट लाइक में स्टडी करते हैं, एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द systemic anatomy. It is the part of cadaveric anatomy. Okay, systemic anatomy. Systemic anatomy, the body is studied
in system. The body is study is in system, like example skeletal system, ठीक है, जिसको बुक वाले कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ओके, एंड नंबर सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड इसके बाद हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम एंड मेनी मोर, ठीक है। नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, ओके, एंड एटसेट्रा, ठीक है। इंडोक्राइन एंड सम अदर सिस्टम्स, ठीक है। सो जिसमें हम इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, यानी सिस्टमिक वाइज हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। So this is our general introductions of our anatomy. Inshallah, in next video, I will upload inshallah and start the upper limb in basic introduction after the start in inshallah. So please like and subscribe our videos, and hope next video inshallah will match better for upper limbs inshallah. And physiology I will upload in the starting, cell to the cell membrane I will start inshallah. And histology we will discuss in epithelial tissue. So now in this lectures, after that we have to upload the anatomy lectures of upper limb, and physiology of a cells, and histology on epithelials. Okay, so wish you best of luck. Goodbye.